वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो इंस्पिरेशनल विंग सीजन 3, अ शो टू मेक यू फील अप, एंथुसियास्टिक एंड पॉजिटिव। तो दोस्तों, न्यू ईयर यानी कि 2017 का पहला एपिसोड है ये और आपको सभी को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई होप यू हैव अ प्रॉस्परस एंड हेल्दी वेल्दी ईयर अहेड। तो चलिए दोस्तों, पॉजिटिविटी को अपने साथ रखिएगा, नेगेटिविटी को कोई जगह मत दीजिएगा और थ्रू दिस शो हम कदम तो बढ़ाते ही जाएंगे पॉजिटिविटी की तरफ। तो चलिए देरी न करते हुए बढ़ाते हैं इस इंस्पिरेशनल राइड को आगे। अगर आप एकदम से जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो हमारा स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान, RADIOUDAAN। और साथ ही दोस्तों, पिछले एपिसोड की जो रिडल पूछी थी, पहेली पूछी थी, उसका आंसर बताने का समय भी बिल्कुल आ चुका है। जो पहेली थी वो थी व्हाट एंड्स विद एवरीथिंग। जी हाँ, कौन सी ऐसी चीज है जो हर चीज का अंत करती है। तो ये पहेली इंग्लिश में है वैसे, व्हाट एंड्स एवरीथिंग। तो दोस्तों, इस रिडल का आंसर है बहुत सिंपल है, बस सोचने की देरी है। तो जो ये आंसर है इस रिडल का वो है जी। जी हाँ, अल्फाबेट जी, एवरीथिंग, EVERYTHING, एवरीथिंग। तो व्हाट इज द थिंग दैट एंड्स एवरीथिंग? आंसर इज जी। तो चलिए दोस्तों, आज की जो इस एपिसोड की रिडल होगी वो मैं पूछूंगी लास्ट सेगमेंट में। तो तब तक हम जल्दी से इन सेगमेंट्स के गो थ्रू हो जाते। तो चलिए फिर मोटिवेशन, डिटर्मिनेशन के अंदर डाइव मारने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए, क्योंकि अभी हम शुरुआत करने जा रहे हैं इस इंस्पिरेशनल राइड की। तो चलिए, स्टे ट्यून्ड, स्टे पॉजिटिव एंड हैप्पी लिसनिंग। In this world of negativity and worries, now let us grab some positivity in the show Inspirational Wings Season 3 with RJ Divya Sharma. Every Tuesday 9 to 10 p.m. and repeat every Wednesday 4 to 5 p.m. only on Radio Udaan, a flight of life. Stay positive, stay happy, stay healthy. So दोस्तों, now we are in the first segment of this inspirational ride. Or like always, we are going to talk about a short moral story that will have a huge impact. जी हाँ, कहने का मतलब है एक छोटी सी मॉरल कहानी की हम बात करेंगे हिंदी में, और जो उसका मॉरल होगा, जो उससे सीख मिलेगी, वो काफी वजनदार होगी। तो चलिए जल्दी से देरी न करते हुए बढ़ाते हैं एक कदम इस कहानी की तरफ। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड। एक बार 4 मित्र होते हैं जो कि बहुत ही समय से अच्छे दोस्त होते हैं, बचपन से ही साथ रहते हैं, साथ पढ़ाई करते हैं। अब थोड़े बड़े हो गए होते हैं और यहाँ वहाँ घूमते हैं, खेलते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। एक शाम उन चारों में से 2 जो बहुत ही अच्छे मित्र थे, उनकी आपस में बहस हो गई, तू मैं हो गई। कुछ समय तक बात बूत नहीं की और रात तक होते होते दोनों की बातचीत बिल्कुल बंद हो गई। एक दिन गुजर गया, जो 2 और मित्र थे, 4 के ग्रुप में जो 2 और मित्र थे, वो काफी परेशान थे कि ये 2 दोस्त आपस में बात ही नहीं करते। तो वो परेशान रहे। उन्होंने कोशिश भी की दोनों आपस में बात करे, पर दोनों तैयार ही नहीं थे। ना वो आपस में एक दूसरे को कुछ कहते और ना ही बात करते। बहस भी नहीं रहे थे, ना गुस्सा कर रहे थे, पर बात भी नहीं कर रहे थे। तो ऐसे चलता रहा। तो दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 3 हफ्ता हो गया। कुछ 1 महीने के बाद जब पिकनिक पे गई उनकी क्लास, तो वो जो 2 मित्र थे जिनकी आपस में बात नहीं होती थी, वो दोस्त दोनों बहुत खुश थे, अपने फ्रेंड्स के साथ थे और दोनों के पास काफी कुछ खाने पीने को था और काफी एक्साइटेड थे पिकनिक को लेके। पर फिर भी दोनों कहीं ना कहीं बस में बैठे हुए थे, एक आगे और एक कहीं पीछे, और दोनों बैठे बैठे खुश तो थे, पर फिर भी एक हल्की सी दिल में दर्द सा था और वो दोनों कहीं ना कहीं दुखी भी थे। वो खुश नहीं थे, हालांकि वो दिखा रहे थे कि वो बहुत खुश हैं, फिर भी वो खुश नहीं थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत सा वजन उठा के वो कहीं चल रहे हों।
चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं, पहाड़ पे जा रहे हैं, ऊंचाई आ नहीं रही है, बस थके टूटे चले ही जा रहे हैं, जैसे बहुत सा भार उठाया हो। तो दोनों सेम चीज महसूस करते हैं। पूरे दिन वहां पे पिकनिक मनाते हैं और रात हो जाती है। रात को जब वापस बस में आ रहे होते हैं तब भी वो दोनों कहीं ना कहीं खोए होते हैं। अभी भी वो अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचे होते और अभी तक वो फील कर रहे होते हैं कि उनके ऊपर बहुत वजन हो जैसे, और वो उठा के कुछ चली जा रहे हो। जब अगले दिन सुबह वो दोनों स्कूल आए तो दोनों ने एक दूसरे से बात की और हाय हेलो हुई। हालांकि वो वाली बात नहीं थी जो पहले हुआ करती थी, पर फिर भी हाय हेलो हुई। और दोपहर तक दोनों को ऐसा लगा जैसे सारा सामान, सारी जो वजन उन्होंने उठाया हुआ था वो उतर चुका हो। तो दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि इस कहानी से सीख यही मिलती है कि जब भी हम किसी के साथ ग्रजेस रखते हैं, किसी से नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, बात नहीं करते, चाहे वो करीबी हो, चाहे वो बहुत ही ज्यादा अच्छा फ्रेंड हो, तो वो चीज हमें ही दुख देती है। तो बेटर है कि हम माफ कर दें, चाहे बात बहुत ज्यादा ना भी करें, पर माफ कर दें और उस बारे में ना सोचें, क्योंकि जब तक हम किसी को माफ नहीं करेंगे वो व्यक्ति हमारे दिल दिमाग पे छाया रहेगा और हमें ऐसा ही लगेगा जैसे कि हम भी उन दो दोस्तों की तरह पहाड़ पे चढ़ ही जा रहे हैं और वजन हमारे ऊपर है, लदा हुआ है, बिना किसी डेस्टिनेशन के हम चली जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है, अगर आप भी अपनी जिंदगी में किसी से नाराज हैं, किसी से गुस्सा है, तो मैं ये नहीं कहती कि अगर उन्होंने गलती किया है या आपने गलती की है कि आप जाके बात कर लें या फिर बिल्कुल सॉर्ट आउट कर लें, अच्छे से उतने ही प्यार से मिल जाए, जो कि हो तो अच्छी बात है, पर मैं इंसिस्ट नहीं करूंगी। कहना बस इतना ही चाहूंगी कि एक दूसरे को हाय हेलो करके माफ कर दीजिए, क्योंकि जो वजन है, जो लगेज है वो आप पे ही रहेगा, बैगेज है वो आपके ऊपर ही रहेगा। तो क्यों ना माफ किया जाए और बिल्कुल लाइट फील किया जाए। तो चलिए दोस्तों, ये मॉरल कहानी थी छोटी सी, इसका मतलब यही था, निचोड़ यही निकलता है कि किसी से अगर आपकी तू मैं हो भी गई है तो उस चीज को अपने साथ लेके मत चलिए, क्योंकि आप ही पीछे खिंची जाएंगे। तो चलिए फिर दोस्तों, नाउ वी हैव टू टेक अ लीप टुवर्ड्स नेक्स्ट सेगमेंट। अभी बहुत से सेगमेंट हमारी इंतजार कर रहे हैं। चलिए फिर जल्दी से बढ़ाते हैं एक कदम इन सेगमेंट्स की तरफ। इस मॉडल को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि हम सभी कभी ना कभी नाराज जरूर होते हैं लोगों से। हैप्पी लिसनिंग, स्टे पॉजिटिव। बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो बोले रे जमाना खराबी हो गई। मेरे अंगराजा जो तेरा रंग लागा, तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई।
You are listening to Inspirational Way, Season 3 with RJ Bija. तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द सेकंड सेगमेंट ऑफ इंस्पिरेशनल राइट, और हमेशा की तरह इस सेगमेंट में हम बात करेंगे, सुनेंगे एक ऑडियो क्लिप को जो हमें मोटिवेशन देगी, करेज देगी, डिटर्मिनेशन देगी। तो चलिए जल्दी से एक कदम बढ़ाते हैं इस ऑडियो क्लिप की तरफ। तो दोस्तों, जो आज की हमारी ऑडियो क्लिप है वो है मोटिवेशन से रिलेटेड, कैसे हम मोटिवेशन में खो के मोटिवेशन को पा सकते हैं। तो ये एक इंग्लिश में ऑडियो क्लिप है, थोड़ी स्लो है, बट इट इज रियली गोइंग टू बी वेरी पावरफुल एंड हेल्पफुल फॉर यू। तो ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी लंबी है, ये 15 मिनट की है, पर यू आर रियली गोइंग टू लव इट। तो चलिए, आई एम गोइंग टू प्ले इट राइट अवे। हैप्पी लिसनिंग, स्टे पॉजिटिव। Please do not listen to this recording whilst driving. This time is for you now, so I'd like you to make the most of it. Get yourself comfortable in a quiet place where you can sit back or lie down and where you won't be interrupted. If you have some, put your headphones on and just enjoy getting yourself in the right frame of mind for the changes that you do want in your life, and only listen to this because you want to. So I'd like you to close your eyes. Take a deep breath in. Really fill your lungs. Hold it for a second or two. And just slowly let that breath out, all the way out. And just relax. Not having to do anything. Just resting there while I'm here. And you can hear my voice. Yet you don't have to concentrate on my voice. Just let it drift over you and drift around you. And in a moment, you're going to begin a relaxing and safe journey, knowing that if at any time you needed to awaken, you can,
But for now, you can begin that journey of relaxation and change, knowing that the more you relax, the better you'll feel. And the better you feel, the more you'll be able to drift down into a wonderful state of relaxation. And the reason you'll be able to relax so fully is because you want to. I've got nothing to do with making you relax now, other than to be your guide. This has been your decision to listen, your decision to begin to change, and your decision to relax, and just let go into relaxation on the inside. That's right. And you can bring your attention back to your breathing now. Feel how naturally your chest rises and falls, and you might notice how good it feels to rest there, feeling the furniture against your body, feeling the temperature of the air on your face, and the soft feeling of gravity gently pulling you deeper down deeper, as you concentrate on relaxing all those tiny muscles in your face, around your eyes, and the small muscles around your mouth and jaw, just letting them all relax. That's right. And I'd like your conscious mind to begin counting down now, in your mind, slowly, counting down from 400 in threes. That's 400. Right. Counting down in threes, 390, but only at a speed that allows you to deeply relax. 94. And you can begin to scan your body now for any feelings of tension. 300. Let's start with your neck and shoulders. 380. Feel a relaxation spreading down your neck. 380. And into your shoulders. Let go of that pain on the neck. 79. Let it roll off your shoulders. 370. Away. And as it does, you can begin to feel new possibilities, new positivity. 307. And that lets you relax your shoulders way down deeper, heavier, yet lighter, as you know things can be different. 361. Sense your body and your arms, and on every out-breath, and you can just feel a gentle wave of relaxation run down from your neck, not needing that to your knee for a while. You can leave the door open to listen as every part of your body gently softens, hearing my meaning. And you can sense any tension in your back. Just ease those long back muscles. Choose to let the stress go. And allow this sense of relaxation to drift down through your thighs now and into the hollow behind your knees. Let small eddies of gently caressing relaxation just dissipate any tension, letting any stress out as you continue to relax your calves and your heels. Just let any tension flow out through your toes, leaving you calm and relaxed because you want to. And in this peaceful state, you can become aware of a new calmness, and this feels safe and good enough to let you relax all the way down now. And as your body drifts down, that wonderful unconscious of yours
the one that keeps you safe in its own way, can begin to drift up and begin to become aware. And as you dream, your whole body is becoming lighter, lighter and lighter, so light that you must surely be floating in a safe, dreamy way. Feel yourself safely supported, drifting, borne aloft by the softest of warm breezes. And you can somehow see, through your closed eyelids, that you're gliding in an ocean of colour, suspended in warmth and colour that somehow seems unreal, and yet at the same time there's a comforting familiarity to it. And this allows you to lose yourself in these thoughts and feelings, just letting go and relaxing all the way down as you float through a wondrous view of red and orange clouds that slowly begin to change now to soft and muted yellows and greens, gentle blues that inspire you as you drift on through the misty indigos and the softest, deepest violets that you can imagine. And suddenly it dawns on you, you realize you're floating through a rainbow, and this awareness relaxes you, and you can become aware of a new tranquility as you float there, lost in time, because here, now, time and space don't exist. They're not important right now. You might have floated here for a moment, or perhaps an hour, maybe a lifetime, or perhaps just the blinking of an eye. And as the colours change, you realize that you can change too, and you begin to feel compelled to take those first steps, driven to get any help you need, inspired to want more, and to open new ways of being, new ways of behaving, changing old ways, becoming all that you want to be, because you want to. And I wonder if you're aware of my voice, aware of my words, aware that your body can relax, and as your body relaxes even more now, your unconscious mind can become aware of any suggestions that will help you. And you may notice that your breathing has changed now, slower than before. You don't have to do anything. All the thoughts in your conscious mind can just slow down, drift off, disengage, and my voice can go with you. And it's like the salmon, and as you hear what I swimming against the flow of the river, all parts of your body are listening to up the waterfall, all trying to keep you safe, not knowing why, often working together, feeling compelled. However, sometimes they have different opinions, strengths about what's best for you. And I want to be parts that are in conflict, a leap of faith to listen very carefully, and you feel a surge of joy as it makes that one line that can be right and leaps over the top of the fall for growth, and you feel compelled to follow, because you want to. And I wonder if you know how the unconscious mind works, how it goes about getting change, what it needs for you to be able to make those changes. All your unconscious mind needs is a thought, a positive thought, a thought of what you do want, a goal, an outcome, a positive thought of what this change will do for you. A thought that's positive and clear,
Then when we combine that thought with an action, a thought and an action, your unconscious mind can begin to recognize that now. It can see what you really want, what you really need at this time in your life, here and now. So given that your mind needs a thought and an action to begin to change, I want you to imagine that in each of your hands there is a button or a switch. In your left hand, if you press that button, nothing will change. Nothing in your life will change. Everything just stays the same. It doesn't get any worse, but it doesn't get any better either. And I'd like you to take a moment to travel forward in time, perhaps a year, where you'll still have this problem. How does that make you feel? Let's go forward again, perhaps 5 years, and you still have this issue. It's like you can look at the people it affects. And what about you? How do you feel about it? Come back now to the here and now. And you can begin to decide to change in a moment, but not just yet, because in your right hand there's another button, and this button, should you decide to press it, will allow your unconscious mind to begin to accept change, a thought and an action, a clear positive outcome, and taking an action. And you can imagine what achieving that change would do for you in a year's time. What would it feel like? What would it look like? What would it sound like? Is it compelling? Do you really want it? Is it worth the effort? Or will you press the right or left button? A thought and stays the same. A positive, clear goal changes, taking you forward even for the next 5 years because you want to. Is that what you want? Go ahead now and push the right button for you. A thought and an action. A clear message to your unconscious mind for change. A clear decision to get help. To find someone like me that can help you make this happen. And now that you've made that decision, a thought and an action combined, you can feel good on the inside, feeling more in control, more decisive, more inquisitive, more interested in what needs to happen to get the change you desire. And I'm not sure if you've been to a museum lately, but as you know, museums are places where they keep antiquities from past civilizations. And these past civilizations had past experiences and beliefs of how the world was. Some thought that the world was flat until they had an experience and they found out that they were wrong. So they developed a new belief based on the new information that had become available to them, and that it was in fact round. And it's interesting how through the many civilizations that there have been, beliefs constantly changed about what is possible and what is not possible. So it may be useful for you at an unconscious level to begin to sort out the beliefs that no longer serve you any use, and begin to relegate them to the museum of your mind, so that they can become antiquities, things that you might look back on with interest and amusement now and again. However, they are no longer a part of your everyday experiences. They will, after all, become old, outdated beliefs that can become part of the outdated museum of your mind. So I would like to suggest to your unconscious mind to
to begin to sort through your beliefs. And over the next few days, you can become aware of the ones that no longer serve you, the ones that get in the way of you becoming your whole complete self. And your unconscious mind can begin to turn down the light on those old beliefs, take out the colour, turn them from films that run into still images. See yourself in those old pictures, detach yourself, and relegate them to the museum of the antiquities of your mind. But always ensuring that you take all the lessons and learnings that are important from those beliefs, so they can be available to you for when they're needed now and in the future. So that when you wake up in the morning, you can find yourself waking up with a new sense of the world around you and the world within you. You can allow this to happen over the days and weeks and months ahead, so that every time you wake up in the morning, you can get a new sense of the world around you and the world within you in a way that is truly in alignment and appropriate with the changes that you're looking for now. And your unconscious mind, and you'll find and begin to become more happy, more positive from now forward. We need to look for what can be done, find new ways to do situations, find new ways to get what we enjoy at the smallest of thoughts, and then smiling and laughing more. A dialogue and becoming more and more positive about how the partner change works. Perhaps you can create a new part that gives you what you need now. You can listen to this recording as often as you wish, each time finding that you're more compelled to make those changes. And the next time you hear my voice, you'll be able to enter a deeply relaxed state twice as quickly and twice as deeply. But for now, I'd like you to thank yourself for deciding to take action. And I'd like you to ask your unconscious mind to set something up. Something that's going to happen within you, that's going to surprise and delight you before this week's over. And you won't know what that is now, but your unconscious mind might. It will come up with this thing that's going to surprise and delight you before the week's over. So, knowing that, I'm going to count from 1 to 5, and when I get to 5, your eyes are going to open and you'll feel refreshed and ready to get on with the rest of the day. So 1, allowing these changes to begin to take place. 2, remembering a thought and an action. 3, becoming more aware of the feelings in your body, a new feeling of calmness and control. 4, being aware of your hands now. And 5, eyes open, wide awake, feeling really good. तो दोस्तों, थी ना एक अमेजिंग सी ये ऑडियो क्लिप। मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लगी और काफी दमदार भी लगी। अगर हम ध्यान से सोचें और इस चीज को अपनी जिंदगी के अंदर लाएं तो मोटिवेशन की कमी होना बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो दोस्तों, कोशिश कीजिए कि मोटिवेशन आपके अंदर आए और आप इस ऑडियो क्लिप को जो सुन के आपने सीखा है वो भी बिल्कुल अपनी जिंदगी में अपनाएं। तो चलिए फिर अब जल्दी से एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट सेगमेंट में। यू आर लिसनिंग टू इंस्पिरेशनल सीजन 3 with RJ दिव्या शर्मा। Happy listening, stay positive, stay tuned. रेडियो उड़ान और मित्र ज्योति ने एक ब्रेल मैगजीन लॉन्च की है जिसका नाम है इनसाइट। इस ब्रेल मैगजीन में आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे एजुकेशन, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, लाइफस्टाइल, स्पोर्ट और तमाम सब्जेक्ट से रिलेटेड बेहतरीन आर्टिकल। ये एक क्वार्टरली मैगजीन है जो आपको साल में हर 3 महीने के बाद उपलब्ध करवाई जाएगी। इस मैगजीन का सालाना शुल्क है 100 रुपए और इसे प्राप्त करने के लिए आज ही अपना एड्रेस मेल करें admin.office@mitrajyoti.org पर
admin.o@mitrajoyothi.org। कॉल कर सकते हैं 8022587623 पर। हैप्पी रीडिंग। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपने इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। खुशियों के पल में भी आंखें तर कर देती हैं। इन यादों को जीने का सहारा कहा जाता है, पर किसी किसी के लिए ये यादें दर्द का समा बन जाती हैं और यही यादें आंसुओं का सबब भी बन जाती हैं। ऐसी ही कुछ यादों को संजोने आ रहा हूँ मैं, आरजे आनंद, हर मंगलवार रात 10 बजे प्रोग्राम यादों का झरोखा। तो सुनना ना भूलिएगा यादों का झरोखा सीजन 2। दोस्तों, इस शो का रीब्रॉडकास्ट भी आप सुन सकते हैं हर बुधवार शाम 5 बजे ऑन रेडियो उड़ान, ए फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं डॉक्टर कमलेश कुमार पांडे, CCPD, रेडियो उड़ान पर आपका स्वागत करता हूं। नई नई सूचनाओं जानकारियों के लिए आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान। धन्यवाद। आज भी अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द सेगमेंट ऑफ थॉट्स, क्योर थिंग्स, वर्ड्स एंड लाइंस। जी हाँ, एक ऐसा सेगमेंट जिसमें हम कुछ एक थॉट्स, ख्यालों की बात करते हैं, क्योंकि अक्सर जो हम सोचते हैं वो हमारी जिंदगी की हकीकत बन जाती है। तो क्यों ना कुछ ऐसा ही सोचा जाए जो पॉजिटिव हो, मोटिवेशनल हो और हमें आगे बढ़ने के लिए सीख देता जाए। तो क्यों ना अपने थॉट प्रोसेस को ही बदल दिया जाए। तो इस तरफ बढ़ने के लिए हमें अपने थॉट्स को बदलना होगा और थॉट्स बदलने के लिए ये सेगमेंट बिल्कुल तैयार है आपके लिए। तो चलिए, लेट अस वॉक थ्रू सम ऑफ द थॉट्स फॉर दिस सेगमेंट। ये थॉट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। हैप्पी लिसनिंग। The first thought for this evening is, anyone who has ever made anything of importance was disciplined. जी हाँ दोस्तों, इस थॉट का यही मतलब है कि किसी व्यक्ति ने भी अगर कुछ अपनी जिंदगी में पाया है, कुछ उसने इम्पोर्टेंट चीज पाई है या फिर कुछ बड़ी चीज उसने अचीव की है, तो वो जरूर डिसिप्लिन्ड रहा होगा। कहने का मतलब है कि डिसिप्लिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिंदगी में। So anyone who has ever made anything of importance was disciplined. जिसने कोई भी चीज महत्व की बनाई होगी वो अवश्य ही डिसिप्लिन्ड रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, the second thought for this segment is, don't spend time beating on a wall hoping to transform it into a door. जी हाँ दोस्तों, समय व्यर्थ मत कीजिए दरबार में सिर मार के कि दरवाजा बन जाएगा। इसके बजाय सोचिए, प्लान आउट कीजिए और जो आप चाहते हैं वो पाइए। एक्शन कीजिए, सोच सोच के ये मत सोचिए कि दरबार में सिर मारूंगा तो दरवाजा निकल आएगा। सो डोंट स्पेंड टाइम बीटिंग ऑन अ वॉल होपिंग टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ डोर। तो कहने का मतलब बस यही है कि सोचिए मत, कुछ कीजिए। सोच सोच के कुछ नहीं होता, करने से ही होता है। तो
तो चले दोस्तों, द थर्ड थॉट फॉर दिस इवनिंग इज क्रिएटिविटी इज इंटेलिजेंस हैविंग फन। जी हाँ दोस्तों, क्रिएटिविटी इज इंटेलिजेंस हैविंग फन। जो क्रिएटिविटी है, जो हम क्रिएटिव हो जाते हैं, कभी आर्टिस्टिक हो जाते हैं, वो इंटेलिजेंस है हैविंग फन। कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति जब फन लेता है, मतलब मजा करता है, तो वो क्रिएटिविटी है। तो दोस्तों ये थॉट थोड़ा अलग सा है, पर मतलब बहुत ही खूबसूरत है। क्रिएटिविटी इज इंटेलिजेंस हैविंग फन, कि जब कोई इंटेलिजेंस फन ले रही होती है, यानी कि जब कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति फन कर रहा होता है, तब भी उसमें क्रिएटिविटी होती है। तो चलिए दोस्तों, द फोर्थ थॉट फॉर दिस इवनिंग इज ऑप्टिमिज्म इज द वन क्वालिटी मोर एसोसिएटेड with success and happiness than any other। जी हाँ दोस्तों, जो ऑप्टिमिज्म है, यानी कि ऐसी सोच जो बस पॉजिटिव रहे, अच्छा सोचे, अच्छा ही करे और अच्छा ही हमेशा अपने दिमाग और दिल में रखे, वो ऑप्टिमिज्म इज द वन क्वालिटी, वो एक ऐसी खूबी है जो हमेशा जुड़ी रहती है सक्सेस यानी कि जीत के साथ, और हैप्पीनेस यानी कि खुशी के साथ। सो ऑप्टिमिज्म इज द वन क्वालिटी more associated with success and happiness than any other। सबसे ज्यादा कोई चीज अगर जुड़ी रहती है सक्सेस और हैप्पीनेस के साथ, वो है ऑप्टिमिज्म। तो चलिए दोस्तों, द नेक्स्ट थॉट फॉर दिस ब्यूटीफुल सेगमेंट इज डोंट लिव द सेम ईयर 75 times and call it a life। जी हाँ दोस्तों, अगर आप गहराई को समझे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा आपको ये थॉट। एक बार दोहरा देती हूँ फिर से, Don't live the same year 75 times and call it a life। जी हाँ, कहने का मतलब है कि एक साल ही 75 बार मत जिए और उसे मत कहिए कि ये लाइफ है। कहने का मतलब अगर आप एक साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल सेम ही चीज करी जा रहे हैं और 75 इयर्स के हो गए आप, और फिर भी आप कह रहे हैं कि ये मेरी जिंदगी थी, तो क्या जिंदगी थी, वो तो एक साल ही था जो तुमने रिपीट किया। तो कहने का मतलब है कि अपने आप को और एक्सप्लोर कीजिए और आगे बढ़िए, एक ही चीज मत रिपीट करते जाइए। सो डोंट लिव द सेम ईयर 75 टाइम्स एंड कॉल इट अ लाइफ। तो चलिए दोस्तों, द नेक्स्ट थॉट एंड प्रोबेबली द लास्ट थॉट फॉर दिस सेगमेंट इज होल्डिंग ऑन टू एंगर इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंड एक्सपेक्टिंग द अदर पर्सन टू डाई। जी हाँ, अगर हम गुस्से के साथ हमेशा गुस्से में गुस्से रहेंगे कि हम गुस्सा कर रहे हैं, हर चीज पे गुस्सा ला रहे हैं आगे, तो वो कुछ ऐसा होगा कि आप जहर पी रहे हैं और सोच रहे हैं कि कोई और व्यक्ति मर जाए। सो कहने का तात्पर्य यही है कि गुस्सा अपना ही नुकसान करता है, किसी और का नहीं। सो होल्डिंग ऑन टू एंगर इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंड एक्सपेक्टिंग द अदर पर्सन टू डाई। तो दोस्तों, दीज वर द थॉट्स फॉर दिस सेगमेंट and I hope you are going to make them a part of your life। इन थॉट्स से सीखिए और इन थॉट्स को अपनी जिंदगी में जगह दीजिए, ताकि आपकी जिंदगी और भी खूबसूरत और भी पॉजिटिव बन जाए। तो चलिए अब जल्दी से एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ और मिलती हूँ आपको इस सेगमेंट के बिल्कुल तुरंत उस पार। हैप्पी लिसनिंग, स्टे पॉजिटिव, स्टे ट्यून्ड। दिल को सुकून चाहिए, पूरी एक आरज़ू चाहिए, जैसे पहले कभी कुछ भी चाहा नहीं, वैसे क्यों चाहिए दिल को तेरी मौजूदगी का साथ यूं चाहिए, तू चाहिए, तू चाहिए, चाहो सुबह तू चाहिए, तू चाहिए, तू चाहिए, हर मर्तबा तू चाहिए, जितनी दफा जिद हो मेरी उतनी दफा
चाहिए, हर सफर में मुझे तू ही रहनुमा चाहिए, जीने को बस मुझे तू ही मेहरबान चाहिए। हो सीने में अगर तू दर्द है, न कोई दवा चाहिए, तू लहू की तरह रगों में रवा चाहिए, अंजाम जो चाहे मेरा आगाज़ यूं चाहिए, तू चाहिए, तू चाहिए, शामो सुबह तू चाहिए, तू चाहिए, तू चाहिए, हर मर्तबा तू चाहिए, जितनी दफा जिद हो मेरी उतनी दफा के आशियाने में तू चाहिए, मैं खोलूं जो आंखें सुहाने भी तू चाहिए। नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा नाम है जी मेरा। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज ही अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। So दोस्तों, now we are in the segment of tips, and in this segment we are going to talk about 5 tips related to how to start this new year. जी हाँ, 2017 की शुरुआत कौन से 5 टिप्स के साथ की जाए? तो दिलचस्प तो आपको भी जरूर लगा होगा ये, राइट? तो चलिए फिर देरी ना करते हुए बढ़ाते हैं इन 5 टिप्स की तरफ एक कदम। These tips will be in English. Happy listening and stay positive. The first tip for this evening is find your motivation. जी हाँ दोस्तों, whether you want to be a singer, dancer, businessman, successful banker, writer or a sports person or anything you want to be, you need to find out your motivation. If you have your motivation, if you know from where to grab your motivation, you can make the best of it and can achieve your goal. So the point is to find out the thing that motivates you, and only then you can achieve whatever you desire. So chale dosto, the second tip for this year is have a plan. Ji haan, once you have decided what you want to be in life or what you are planning, what you are desiring, you have to make a plan. Once your plan is ready, you can do according to the plan and can grab your dream. Dear friends, it's not so easy but not impossible too. So make a plan, no matter whether your goal is small, big or huge. Just make a plan and you can go the way your plan is. So chaliye dosto, the third tip for this evening is make small goals
to achieve a big goal. जी हाँ friends, a huge lifetime goal can take a lot of time, but if you have short goals during the process, these goals can be achieved frequently and you can feel motivated too, because whenever we get through our process and gain and achieve a goal, we get motivated and we get appreciated too. So make sure, if you have a goal to be a great singer, make shorter goals first. Just come up with some tiny goals, achieve them step by step, reach to your ultimate goal. So make small goals to achieve a big goal. तो चलिए दोस्तों, the fourth tip for this evening is don't think negatively. Yes friends, no matter what your dream is, what your goal is, what your aspiration is, you have to be positive, you have to be hopeful, you have to be willing. If you are thinking, I will try but I don't think so I will make it, then you are already sowing the seeds of negativity, and you have to make sure that you don't bring in any negativity. If you are starting a thing or you are deciding to walk on a path, you have to be careful that you are starting it with a positive mindset. Right friends? So don't bring negativity in your way. If you will achieve it, you will achieve it. If you fail, you will achieve next time. So don't just bring negativity in between and lower down your morale. So friends, the fifth tip for this evening is have a realistic goal. Yes friends, having a goal is a good thing, but having a non-realistic goal is a very bad thing. You cannot have a goal which cannot be achieved. Of course, 99.9% goals can be achieved with determination, courage and motivation, but if you have a goal that cannot be achieved, it will just fetch you disappointments, frustration, blah blah and blah. So the point is, your goal shouldn't be unrealistic. Don't think that you want to fly. You cannot fly. So your goals have to be very realistic, and only then you can start working on it. So friends, these were the 5 tips for this segment, and I hope you are going to start this year 2017 with having these 5 tips in mind. So friends, I'll be right back after this short break. You are listening to Inspirational Wings Season 3. Happy listening, stay tuned, and don't forget to embrace these tips in your life. साची साची तेरी नजरें एक दर्पण, देवे मन की ये खबरें एक परछन, अधरों ने कुछ ना कहा रे, नैनों ने कह दिया, तूने तो पल भर में चोरी किया रे जिया मोरा जिया, तूने भी पल भर में चोरी किया रे जिया मोरे पिया।
जिया मोरा जिया गुप चुप दिल में आया सजना स्वांग रचैया रे पल पल हर पल जिसकी छाया अपना पार लगैया रे ओ तुझ पर जान हमने लुटाई है तब जाके आई है तूने तो पल भर में चोर किया रे दिया मोरे दिया सच सच तेरी नजर एक दर्पण देवे मन की खबरें एक पल अधराने कुछ ना कहा रे मैनों ने कह दिया तूने तो पल भर में चोर किया रे दिया मोरे दिया ओ तूने भी पल भर में चोर किया रे जिया मोरा जिया You are listening. Radio Udaan, a flight of life. www.radioudaan.com. Radio. तो दोस्तों now we are in the last segment of Inspirational Wings Season 3 और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये आज का जो एपिसोड था आपको अच्छा लगा होगा। जितने भी सेगमेंट्स थे पॉजिटिविटी के, मोटिवेशन के, चाहे वो थॉट्स हो, टिप्स हो, ऑडियो क्लिप हो, कहानी हो या फिर कुछ भी हो, आपको पसंद आया होगा। अगर आपके पास भी है कोई स्टफ जो मोटिवेशन देता है, डिटर्मिनेशन देता है, अपलिफ्ट करता है, तो जरूर शेयर कीजिए ताकि मैं आरजे दिव्य शर्मा उसे एक हिस्सा बना सकूं इस शो का। तो चलिए दोस्तों, जुड़ने के लिए, अपने फीडबैक्स, व्यूज शेयर करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा रेडियो उड़ान है स्काइप आईडी, वेबसाइट है www.radioudan.com और आप दोस्तों फेसबुक पे भी पेज लाइक कर सकते हैं, वहां पे जाके आप व्यूज दे सकते हैं। URL है www.facebook.com/radioudan और साथ ही मेल @radioudan.com पे मेल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक सेम टाइम ट्यूसडे 9 to 10 PM एंड रिपीट every Wednesday 4 to 5 PM only on Radio Udaan, a flight of life। तो दोस्तों आज इस एपिसोड के अंत में पहले पूछने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि साल की शुरुआत पॉजिटिविटी के साथ कीजिए। नेगेटिविटी को शुरू से ही अपने से दूर रखिए और कोशिश कीजिए कि हर चीज का पॉजिटिव पहलू आप बिल्कुल देखें। नेगेटिविटी एक ऐसी चीज है जो आपको बिल्कुल खोखला कर सकती है और आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपको अकेला महसूस करवा सकती है। तो चलिए दोस्तों, ये जंग है हम सबके कि हम नेगेटिविटी को आने ना दें अपने आसपास और कहीं भी किसी के पास भी भटकने ना दें। तो चलिए दोस्तों, अब मैं पूछ लेती हूँ एक पहेली और फिर मुझे कहना होगा आपको गुड बाय फॉर दिस एपिसोड। तो दोस्तों जो आज की रिडल है वो है, विच रूम हैज नो विंडोज
एंड डोर्स। जी हाँ, कौन सा ऐसा कमरा है जहाँ पे ना ही कोई दरवाजे हैं और ना ही कोई खिड़कियां हैं? विच इज द रूम दैट हैज नो विंडोज और डोर्स? तो दोस्तों, जब भी हम कोई चीज सॉल्व करते हैं या किसी भी चीज का आंसर देते हैं तो एक पॉजिटिविटी आती है। तो क्यों ना इस रिडल का आंसर देके आप थोड़ी सी पॉजिटिविटी बटोर लें। तो इंतजार रहेगा मुझे आपकी रिडल के आंसर का, और जो आंसर है आप वो दे सकते हैं नेक्स्ट एपिसोड के पहले सेगमेंट तक। तो चले दोस्तों, मुझे इंतजार रहेगा, आप बने रहिए। इस इंस्पिरेशनल राइड से लेती हूँ मैं अलविदा, पर आप रेडियो उड़ान की फ्लाइट पे बने रहिए। नेक्स्ट शो लेके आ रहे हैं आरजे आनंद। शो का नाम है यादों का झरोका। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे पॉजिटिव।